Jai everyone, welcome to this another episode of the Statecraft series where we discuss important events of national and international importance. And today, to discuss the analysis and analyze the ongoing developments and what was the backdrop of the recently that happened the RedFort car blast. And to discuss this, we have with us Jitendra Kumar Ojha Sir. Sir, it's always a pleasure to have you on show, and we would like you to share your views on this very serious and a sensitive topic, sir. So, sir, what are your opening comments about what has happened? Navjot, we have to come out of Indian state and Indian society. Both have to come out of this tactical and piecemeal approach. I have written a paper and I have said, talked about an indigenous strategy on terrorism. And I believe that no issue pertaining to statecraft or any dimension of governance and security of state and society can be handled in isolation. Yes, when a challenge comes, it has to be tactically responded. But your tactics and strategy, long term strategy, they must be synergized appropriately. So it's very shameful that we have not been able to overcome the threat of two threats. One is Islamic terrorism, Islamic radicalism at one level, and second level the terror or threat posed by a very perverse political and governance and security structure in Pakistan. You know, I have always believed that statecraft is way beyond law, academics, and theory, and it is not a matter of common sense alone. Common sense may play a little bit of role in tactics, but not in terms of long-term strategy. And right now, what is happening that a significant section of our society, especially our minority population, has been subverted. And when we talk about counter reaction in form of Hindu parochialism or Hindu extremism, it only feeds Islamic radicalism and it does not serve our purpose of larger purpose and goal of statecraft. We have to understand who we are, isn't it? There's a difference. Even if Hindus try to ape Muslims, it's not possible. Muslim way of life and Pakistani the same way of life, it's just not possible. So we have to understand we are one of the wisest people. There is no doubt about it. If you see the quality of our diaspora, wisest diaspora, smartest diaspora, but statecraft is not about technocracy or engineering. It's a much wider dimension, and this statecraft cannot come by reading books. You have to practice it. It's the science of practitioners. So if you succeed more and more, naturally this knowledge and wisdom and capacity will enhance, which is not happening. This is being blocked. I feel number one, and there's very little understanding, and people are taking this subject very casually and lightly, and everybody has become by reading two articles and books an expert in statecraft. So this is what I feel. It's shameful, sad that so many innocent people have to die this way. It's an Right, insult to Indian state, and it is objective is to undermine popular trust. Terrorism, I've always said, its objective is to undermine popular trust in ability of Indian state to protect its people, and I strongly disapprove and condemn this hysterical coverage of media. Most of these media channels are outcome of shady financial this thing. They should be banned, except for two, three media. Most media houses in India deserve to be shut down, and most of these so-called young people who are journalists, they should be gainfully employed and engaged somewhere else. I right, sir. conclude. Right, right, sir. Sir, what एक जो बहुत important चीज जो समझनी है, despite the entire machinery in place, we are at the high level vigil, and most of the agencies they're trying to do the best they can. How do you see this incident happening in the heart of the city? In the backdrop, some of the developments that have been happening over the past couple of months, seizures happening with a large tranche of explosives in Faridabad, and for that matter, biological, chemical warfare, that is also being linked. A Ricin, the chemical that has been reportedly being prepared with the use of castor oil, it gives the it reminisces the times of the Cold War when assassinations used to happen using poisonous substances, particularly the example of Georgy Markov in Bulgaria that happened. So आप सर इसको कैसे आप लिंक करके देखते हो इस पूरे सिचुएशन को, particularly this happening in the heart of the capital? Not only this Bulgarian incident, this has always been known way of all-out warfare, we say. Firstly, I have always said, Navjot, that terrorism is not a law and order problem. You know,
Police has a Right, sir. limited role. Police and security agencies can do to a certain extent. If you see my paper, I have talked about vicious cycle of terrorism, which are different components which are feeding terrorism. The threat of terrorism in India is very different from threat of terrorism in America or in American soil or in Europe or for that matter in Pakistan or Afghanistan or anywhere else. So I'm not saying, of course, police and others have to be very, intelligence have to be very alert that anything possible which is likely to fructify into a terror attack, that has to be preempted, isn't it? But long-term preventive strategy has to be fused in our entire governance apparatus. It's not, that if a terror attack has happened and howsoever smartly you investigate, you have lost half the battle, or more than half the battle. Right, Every right, terrorist attack, I must say, on your soil is a slap on the face of entire state and society, number one. So why has it happened? It's simply humanly not possible, Navjot, to prevent and detect every possible terror attack. When I've talked about vicious cycle, I say if there's hate and hateful propaganda, even if it's wrongful propaganda, you know, it will instigate or incite some people to carry out this attack. So hate has been building up in our society. Hate has been a part of, xenophobic hate has been part of the way, societies in Mongolia or Hittite civilization or Arabia, they have done deception, hate, cruelty, criminality. These are ways of life. I'm not saying this is part of Islam. Unfortunately, Islam came in that way, and xenophobic hate had helped, people come together, small male-only groups and gangs. They have come together. It's a very complex science. I have done extensive research on this, how their neural circuitry has evolved and how it has been fanning. And then, in certain situations, it becomes dangerous. While it builds cohesion at one level, it breeds hate against so-called non-Muslims. All Muslims are not to be responsible. Many Muslims are victim of the same. But this ecosystem is not easy to do to eradicate, and common sense can't help it, isn't it? So you need a very strong strategy of governance, which has been missing. India has been suffering from poverty of statecraft. We are just, what should I say? I get very saddened and this thing. So what? Firstly, it just can't be prevented. Hate is building up. Access to explosive or these kind of biological weapons, it cannot be prevented in today's era. Even propaganda cannot be prevented. So this is why 7.5 years back in one of my blogs, after it came out, I had written that democracy has to evolve to next higher level, not at a philosophical level, but in terms of its institutional capacity of governance and security that has been there. Thirdly, I would say you have to be very mindful, that what Pakistan has been doing, given the kind of political system Pakistan has, military dominance, kind of comprador force which is willing to do everything to stay in power there, and its whole survival is dependent upon this organized crime and hate machinery. If they are not able to carry out this kind of terrorist attack or radical propaganda, their very survival will come under threat. So they will continue to do that. But objective is not that you remove the threat at a great cost. At minimal cost, how can you do that? So this is again, I would say, we have to attack at multiple points, not at one point. We have to marvel our police agencies and this thing that despite so much of threat, despite so much of adversity, they are able to still prevent. They've still managed to prevent situation, contain situation, this thing. But what we are missing is a larger, comprehensive, all-out strategy which can attack this menace of terrorism at every level at minimal and sustainable cost as part of your routine governance and security strategy and action and outlook and machinery. That has not been happening. So this is why these attacks keep on happening. And another thing I have written in one of my papers, that is very, very well-read paper, and it's on my blog. Normally people say readership of such paper does not, barely crosses into thousands, because this is a paper for specialists, isn't it? Practitioners. This has gone into several thousands. So in this paper, again, I've said that even the most formidable military of United States, they have failed in irregular warfare, whether it is in Afghanistan or whether it is in Iraq or whether it is in Vietnam earlier or everywhere else. They have so much of access to resources, but inability to fight this kind of war has cost them very heavy. And I believe that, terrorism is not a standalone problem. Terrorism emanates from, the whole world is now talking about,
when I used to speak a decade and a half back, not many takers were there, that terrorism and organized crime are closely linked. And those who are, beneficiaries of organized crime or patrons of organized crime, they would never ever like, a strong rule of law, a cohesive society, a healthy and harmonious society. So this is a very secret dimension of geopolitics, which is not being talked about. And this secret dimension of geopolitics, I'm stretching your this thing, is unfathomable. I repeat, unfathomable by academics and journalists. This is the domain of practitioners, and not practitioners everywhere else. And a very specialist this thing, and not all practitioners, I would say, that who can build that larger picture. So our strategy is flawed, our sincerity is doubtful, and we are not willing to carry out a comprehensive changes where these kind of threats can be evolved, and total poverty of statecraft, I would say, from our stakeholders. Right, sir. Right, sir. So you talked about आपने कहा कि since it's quite it's non-preventable because it's very difficult to prevent most of these terror activities. It's very difficult to preempt and control all of this entire thing that is happening. As you No, no, talked no. It about, is possible. It is possible. But if you focus only on prevention within the existing system, your yes, task becomes impossible. like That's you why when pointed I'm out talking about, about statecraft, I'm saying that you have to bolster your capacities everywhere. China is only example right, right, that sir. is transforming itself, not perfectly, I would say. Even they are not doing it perfectly. We had all the potential, but we are not doing it. So the kind of intensity of threat that we are facing, terrorism is one of the threats, and terrorism is not a standalone threat. Terrorism, organized crime, That, subversion, irregular, whole dimensions, and that's why you need a comprehensive approach. It is preventable. It can be it's contained a, to a substantial extent, but not with your existing approach where you want certain gaps to exist so that where corrupt politicians can thrive, where foreign deep states can thrive, they can have a control on your system, and yet you want to prevent it. It's not possible. so since you I mentioned hope it's I'm terrorism, clear now. yeah, right, right, sir. Since you mentioned that terrorism is quite a profitable business and the organized crime and the narco terror, the fake Indian currency, all of this is, the nexus, the web that is quite interwoven. And it is we have to break that, that cartel to actually hit at the root of the terrorism. So what do you think, sir, at the security level, at the citizens level, and at the government level, at the strategy level? What are the steps that can be taken to at least preempt some of these attacks, or maybe in the long term strategy we can prevent them? Because the point I was trying to make, sir, so how do we prevent it at various levels for the audiences who may not only be policy experts but the commoners as well, for their benefit? If you could throw some light on this, what are the various strategies at various levels? So you're one of the rarest men who have this distinction of being into this field, in-depth practitioner as well as the understanding. So what is your Contributor, a practitioner and a contributor, you can say. Anyway, right, no, right, 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 sir. our ultimate objective has to be, to prevent every possible attack, every possible attack, but not in this way. This is why I'm talking about, restructuring of all institutions to deny space for terrorism. But given our all-round capacities, it's not easy. It's not possible, through clerical and academic approach. This is our legal approach. This is not going to be possible, you know. So this is why, the second thing, as you say, how to go about it. Of course, police and others and intelligence and security agencies and citizens have a role wherever they come across something suspicious or doubtful, they have to alert this thing. But when you see the vicious cycle of terrorism, where I have, a circle I have drawn, and I have started from where, when there is radical propaganda, when there is xenophobic hate, where people are talking about hate against, we are a heterogeneous society, talking about hate against another community or something. So terrorism starts from there, isn't it? Once you are talking about hate against others, so every action becomes justifiable. And, from there flows next easy access to funds, logistics, training, infrastructure. The landscape, if you see in Old Delhi, it's a rife. It is designed to carry out large-scale collateral damages, isn't it? It's not possible for any, if there is urban warfare, I'm sorry to say, this has to be prevented, isn't it? So these are at one level. What I would say, not for common people, I can only say if you find something, reach out to police, tell others, build bridges with police. Lower level of police, also I said, please reach out to society. Then I would say, reach out to entities like Devband or others also that who are preaching hate,
this hate is so deeply interwoven in so-called Islamic identity. Very unfortunate that, not all, but significant sections, that this is cancerous, isn't it? So at this level, domestically, we have to see how we can, detect and prevent a law and order situation or security situation which can fructify into terrorism or group violence, etc. So this is at one level. But secondly, if you see what happened in Bangladesh or what happened in our this thing, it shows that global forces who are sponsoring terrorism, who would like India to stay bogged down. Some forces, they have eradicated and threatened terrorism from their own soil, but they have exploited weaknesses within our system to see that terrorism keeps on troubling us. So we have to be aware of it and see, every solution to this problem is not possible domestically, but it's also not possible by, attacking Pakistan or doing things there. There has to be strong coordination. So that's why I'm talking about statecraft. Navjot, I will tell you, the number of high-end spirited securocrats of this country, people who have taken on Islamic radicalism, the way they have been targeted, crushed, even under Modi government, through criminality, through fraud, through forgery, and judiciary and police, and everybody has ganged up against these people, is phenomenal. Terrorism is not that anyone can do this. It's a very complex science, isn't it? Within that, there are champions. Everybody cannot play chess, but in our bureaucracy is designed that every Tom, Dick, Harry, everybody is in the same line. Seniority is no indicator of your ability, isn't it? Ability in terms of professional knowledge or even leadership quality. So this system is designed to fail, isn't it? This system is designed in such a way that irregular warfare of different shades will keep on happening. Terrorism is very spectacular. Straight away, people are dying, blood is there, flesh is there, and where it simply attacks your mind. I'm not saying this is not new. That's why it makes a very spectacular attack. And this is why at one point of time, I was asked to make some recommendation by domestic agencies. So I had recommended zero coverage of terror attack on media. As far as possible, terror attack should be guarded from media. Moment media starts reporting it in a hysterical way, what is it doing? It is falling in the trap of terrorists. Your Mumbai attack or all this thing, live coverage and even this thing. You are promoting agenda of terrorists. What do terrorists who are willing to die, what do they want? They want publicity and they want to die for that. They're psychologically ill people. And you are giving them publicity. I'm saying one of the reasons. So this is why, we have not learned lesson. We do not appear sincere. Do not appear interested, isn't it? For some people, it is a business, no doubt about it. And terrorism is a small component of a larger infrastructure of covert warfare. And that covert warfare, instead of fighting it, letting it thrive, letting it mushroom and then fight it, it does not serve purpose. Because if prevention of terror attack, Navjot, is not profitable for anyone. It's a thankless job. You do so much and nothing happens in society. So an attack happens, it captures the imagination of everyone, and then some hero comes and then does something. So he becomes superhero and becomes popular. So this is what I call, adharma in governance, which is, a total violation of Raj Dharma principle, which my mentors and seniors said, that governance should not be driven by desperation for name, fame, or wealth or sensual pleasure or anything. Moment governance is driven by these, it will be suboptimal and in certain cases disaster. So I think this awareness has to be there that, look, we have to prevent it. And secondly, we are a multi-religious society. We cannot allow social fracture, social cohesion. Even remotest of threat by anyone against any community should be taken strict care of, strictly punished. Even in closed rooms, you cannot preach it. And finally, I would say you have to recognize that the way Islam has evolved in certain geographical regions, certain cultural regions, it is inbuilt xenophobic hate is part of it. You have to defang that. And that defanging, if you do it as a standalone measure, you will never be successful. And that's why I'm talking about indocracy. That's why I'm talking about statecraft, not as a measure to counter Islamic terrorism, but to create a mechanism of governance where there are inbuilt checks, filters, which destroy this radicalism and xenophobic hate, whether in the name of Islam, majority in the name of Islam, and even some dishonesty and cowardice which is coming up, and the malicious profiteering on certain issues in governance by so-called Hindus also. Because India cannot afford this. And why I'm saying it, Navjot, we are very lucky that, after
centuries of invasion, colonial exploitation, and plunder, we continue to survive. And we are not only for ourselves. I have said 15 years back in one of my speeches, how the world will fare will depend to a very great extent on how India does. Because we are one country with so many linguistic, cultural, and identity differences, and yet we are sustaining an open system, an open and competitive political system, is largely due to our societal ethos and values. Each of these have not been destroyed, and that's why it has to be protected. That's why we have to terrorism, and this hate is the biggest threat, and that's why we need robust principles of statecraft. So look at the larger picture, solve this terrorism, this thing at a tactical level also and strategic level also. If terrorism can be destroyed, substantially destroyed from this part of the world, but not through this approach of a dishonest clerk, which has gone into our DNA, where the Western But sir, so-called former imperialists. I'll just conclude. Sorry for this thing. So many ideas come into my mind. You have to forgive me for that. That this psyche of dishonest clerk has been infused in Indian DNA. You know, and it is possible. The entire psyche and systems can be rigged. And this is where I say poverty of statecraft. So if you are able to resurrect those highest quality of wisdom, principles, and integrity of statecraft, all cannot do it. I can assure you the a significant part of the world will become much, much better, and the rest of the world, including the so-called developed West, will have hope from India. I conclude. right, sir. Sir, as we understand, as we discussed about how terrorism is not a law and order problem, but we have most of the policing being done by the policemen who are trained in managing law and order and not in terror-related incidents. So that is a constraint that we have. Now, how do we mitigate this challenge and ensure that our policing machinery and security machinery moves into convergence and is equipped enough to deal with such challenges, not just after the incident has happened, but prior to the incident having happened? So how can that be taken care of? First of all, we have to realize that if there's efficient policing, terrorism can be contained to a great extent. But terrorism cannot be contained by police and courts itself. If our police is corrupt, if our courts are corrupt, the problem gets compounded, and police and courts are not corrupt because people are bad. As I said, why I was saying previous this thing, that our systems have been rigged. Foreign agents are occupying very high position. They are building so much of enormous. Never allow strong policing to come up and strong this thing to come up. So how to go about it? We need covered capacity and not to act the way America acts or the way China acts. We have to expand a stronger rule of law mechanism all over the world, is where our people are not caught, interfering with rule of law. I will tell you one of these charges. I have written it on this thing. One of the charges I've faced, the developed countries also, and it is their part of court documents, that many of the anti-India terrorists or anti-India forces who are targeting us, who were sponsors of terrorism. I'm telling it, there's a threat to me and the threat will happen, and Indian state has washed off its responsibility. Still, I'm telling you what I did. I never said he's doing terrorism because it's difficult to establish. It's a long ordeal. But then they were committing other crimes. One of the crimes they're bound to commit, any terrorist thing, was what? They were raping women, they were misogynistic, they were committing variety of other crimes. So I approached local society, which had very strong rule of law and fairly better and transparent judiciary, efficient judiciary, fairly transparent police, both empower each other, isn't it? If police is corrupt, judiciary will also go down. If judiciary is corrupt, police will also go down. If both are corrupt, we are going to sink, which is happening in India, isn't it? So in that case, I said, look, this person is a criminal. You don't arrest him for my sake. I can't give you details, but those who know, they are aware of all details also. So what happened, that those people were knocked out of the system, isn't it? So you have to, and they said, you are one of our protectors. Who's protecting our society, isn't it? So ultimately, I have realized through my experience that given the kind of challenges we are facing, we can't tape America, we can't tape Pakistan, we can't tape China, because we have severe constraints, and culturally and civilizationally we are not designed to ape them, because even a brave community of Sikhs, they believe in seva, they are helping people. So genetically we are very, very different, and I don't consider any of Indian faiths as different from each other. We are branches of same large tree, isn't it? Where humanism, respect for human, this thing is there. So what I'm trying to say,
that when you're doing, if you start enhancing this rule of law, this is a strategy you can say. I know this man is doing this thing, and money, he's involved in money laundering, he's involved in narco terrorism or drug trafficking on India and coordinating from some developed part of the world, and I can't pin him down through law. Law is still not developed. बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर ये मैं देख रहा हूं कि किसी कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसमें कोई सो कॉल्ड पाकिस्तानी है या इस्लामिक टेररिस्ट है, वो डेवलप्ड कंट्री में सुरक्षा एंजॉय करते हुए बैठ के वहां पे क्राइम कर रहा है, चाहे वो रेप करे, क्योंकि उसकी जो साइकी, वो तो रेप तो करना ही करना है, मिसोजिनी तो उसमें होनी ही होनी है, अपनी बीवी की भी पिटाई कर रहा है, वो भी होनी ही होनी है। अब मैं समझता हूं कि सुनने के बाद दुनिया भर के अच्छे सिक्योरिटी के लोग उनको इस पे ध्यान दें और इस मेथड को इस्तेमाल करें, तो वो जानिए, जानने के बाद वो दूसरे भी वहां लोकल सोसाइटी को हार्म कर रहा है, उसको जानिए, वहां के लॉ इन्फोर्समेंट को इस इनडायरेक्ट तरीके से उनको मदद कीजिए कि भाई ये आदमी कर रहा है, तो आपने एक दुश्मन का विकेट तो गिरा दिया ना, एक उसके पिलर को हटा दिया। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप भारत के रूप में हमें अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है, अपने देश में क्रिमिनल जस्टिस को सुधारना है, वहां भी करना है। अब आप पूछिएगा अपने देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे सुधारें, तो देखिए हमारा सिस्टम तो डिजाइंड है कि ये मल्टीपल लेवल ऑफ पुलिस में जो एंट्री है उसको बंद करके मैं चाहता हूं एक लेवल पे सारे कांस्टेबल या नॉन कांस्टेबल बने, और ये संभव है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एफर्ट को मेजर किया जा सके। प्रोफेशनल आउटपुट क्या है, लीडरशिप आउटपुट क्या है, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो लीडरशिप आउटपुट विजन ये मैटर करना चाहिए, और नीचे है तो प्रोफेशनल आउटपुट मैटर करना चाहिए। अब कोई थाने में बैठता है या कोई जज भी बैठता है तो कहां ये चीजें मैटर करती है, तो आपका सिस्टम तो रिग किया गया है कि इट इज डिजाइन टू बी सब ऑप्टिमल इनएफिशिएंट। तो देखिए अगर आप दो चीजें करें, जो मैं भारत तंत्र की बात कह रहा हूं, कि आप अपने सिस्टम को अगर इसमें इंसेंटिव लाते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा कंसेंसस बिल्ड करते हैं, जो कास्ट वाले, डिवाइड वाले, रीजनल वाले हैं, मेरे हिसाब से वो सारे देश के दुश्मन है। वो फॉरेन ये कि एजेंट हो या नहीं हो, लॉ नहीं स्टैब्लिश कर पाएगा, एजेंडा तो वो फॉरेन का ही कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी अबाउट इट, किसी को अच्छा लगता है वो उनकी चॉइस है, वो भी हमारे अगेंस्ट में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यही हकीकत है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अपने देश में अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप एफिशिएंट बनाते हैं तो एक स्पेस दूर करेंगे, दूसरे के देशों में यही कूटनीति है, यही क्राफ्ट है कि उनके जो कैंसरस एलिमेंट है वहां से उनको हटा के उनके देश को अच्छा बनाते हैं, तब हमारे लिए वो एक्सटेंडेड रिंग ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। और ये जो डेमोक्रेसी का प्रेजेंट ढांचा है, तो ये डकैत के गिरोह जो होते हैं, जो लूट रहे थे, पायरेसी कर रहे थे, उन्होंने एक बताया कि चलो लूट का हिस्सा बांटने के लिए हम थोड़ा आपस में बातचीत कर लेंगे। ये कहां डेमोक्रेसी है कि अपना अपना इंटरेस्ट ये कीजिए। आई एम सॉरी आई हैव एक्सटेंडेड, आई होप आई हैव ट्राइड टू कन्वे द पॉइंट टू यू at a tactical level also and at a strategic level also. If you have any doubt, please ask me. Yes, sir. So the point I was trying to make, I was very keenly listening to you, and the very valid, doubt came to my mind. We have this thing that the police is, having the lack of spine and there is corruption, system is rigged. But sir, do you think that there is this lack of fear of punishment, or maybe the systems are not penal enough? The implementation of the penal provisions is not that strong that those who indulge in such activities, they don't have the fear of law. For example, the same citizens who move to foreign countries, they are kept within the purview of the law. So is it the failure of the implementation of the laws that are already in place, ताकि हम एटलीस्ट जो साइकी जो रिग हो चुकी है उसको हम किसी लेवल पे कैसे ठीक करेंगे सर? So we have to find out a way to at least puncture that balloon of that rigged psychology. So what is your perspective on that, sir? देखिए कोई भी आसान सोल्यूशन नहीं होगा, इट्स नॉट दैट इजी। मैंने कहा ना कि आप एक एग्जांपल बताइए ना जो जिसने इस्लामिक रेडिकलिज्म को हिंदुस्तान की पुलिस से, इंटेलिजेंस से या कहीं से भी उसने टेक ऑन किया है और वो नॉर्मल बचा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। कोई बचा है तो बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद बचा है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। ऐसे बड़े शेडी आते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया, ये हो गया, वैसे हो गया। न तो पुलिस उसके रेस्क्यू में आती है, ना अदालत आती है, ना पॉलिटिशियन आता है, कुछ नहीं आता है। एक टेररिस्ट आता है तो 500 लोग उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ऑर्गेनाइज्ड या अपराइट सिक्योरिटी किसी भी जगह से आता है, अगर उसने इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क को हिट किया है तो कोई उसके साथ नहीं आता है। मोदी गवर्नमेंट भी उसके साथ नहीं होती, योगी जी भी उसके साथ नहीं होते हैं, और हिंदुस्तान के जज भी होस्टाइल हो जाते हैं, सब होस्टाइल हो जाता है। यही मैं कहता हूं Reason, कि ये reason, sir? रीजन की सिस्टम आपका रिग्ड है। इनडायरेक्ट जब आप सिफारिश कर रहे हैं, कहते हैं इनको कर दो, कोई भी झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोलने के बाद जज आपके डरते हैं, क्योंकि आप सारी जिंदगी किताब की इंफॉर्मेशन रटते हैं,
करेज कहां से आएगा? देखिए 1000 साल राइट गुलाम रहने के बाद ये सर्वाइवर की इंस्टिंक्ट है, तो आपकी साइकी जो रिग कर दी गई है कि डरपोक बनिए। बड़ी सोसाइटी बनाने के लिए खून तो देना पड़ता है, तो खून दिया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ खून देना, मर जाना ही पर्याप्त नहीं है, दिमाग भी लगाने की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान का ये डिबॉच खोखला सा ढांचा है, कितने बेकार के लोग हैं, उनके लोगों को हमें मुक्त कराना है, हमें आजाद कराना है। तो आप में सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में इतनी स्पाइन होनी चाहिए, जो हो ही नहीं सकती है इस ढांचे से रिक्रूटमेंट जो आप कर रहे हैं, कि वो कहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन कोई नहीं क्रॉस करेगा, दूसरे को कहे ये रेड यस लाइन है, और उस पर बातचीत हो। राइट तो आप जो मॉरियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं कई हजार साल अचानक पीछे जा रहा हूं, वहां मॉरियन सिस्टम जो कौटिल्य की किताबों को देखने के बाद ये मिल रहा है, तो क्या था, राजा को जो एडवाइस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती थी, मैंडेटरी थी, एडवाइजरी नहीं थी, आपको करना ही करना है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आप सो कॉल्ड एडवाइजर्स लाते थे, उस समय तो छोटा सिस्टम, छोटा देश रहा होगा, तो साफ कहता था कि दे हैव टू बी वाइजेस्ट ऑफ द वाइज एंड मोस्ट वर्चुअस। राजा की अपनी लाइफ जो थी ना, कि 4 बजे उठने के बाद जो भी इस प्रहर में क्या करेंगे, दूसरे प्रहर में क्या करेंगे, तीसरे प्रहर में क्या करेंगे, बड़ा कंट्रोल्ड होता था, ताकि नाइस आपके ऊपर गलत इंपैक्ट नहीं आ पाए। तो जब हम भारत तंत्र की बात कहते हैं, तो हम पीछे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल लेके आ सकते हैं। तो आप कहते हैं क्यों होता है? देखिए, सिफारिश करके जज में, मैं तो देखा हूं, खुद अपनी आंखों से देखा हूं कि जज को पैर छूते हुए लॉ मिनिस्टर के चरणों में लेटते हुए कि हमको ये जज बना दीजिए, अब साल और कभी का मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं। जज का करप्ट होना एक एटर्नल ट्रूथ है, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खुद फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जजेस आर डोंट कम फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो देखिए ये इतना आसान नहीं है। आप में से मैंने कहा ना कि किसी को भी दिखाइए, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मैं कहूंगा कि कुछ पुलिस के लोग, कुछ जुडिशरी के लोग जानते हुए कि ये मौत है, जानते हुए कि ये मरना ही मरना है, उसके बाद भी बचाने का, फौज के लोग ऑफ कोर्स जानते हुए कि मरना ही मरना है, फिर भी करते हैं, ये हमारी खूबसूरती है। तो देखिए जो टेररिस्ट अटैक हुए यहाँ पे तो गरीब लोग मरते रहे हैं, सिर्फ मुंबई के टेरर अटैक में थोड़े बड़े लोग मरे। अमेरिका को तो कोई लेना देना ही नहीं था, सारी दुनिया में कहा जाता था कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, 9/11 का अटैक होता है तो वो आती है। तो आप कहते हैं कैसे होगा? एक मॉरल करेज की जरूरत है हिंदुस्तान में, और ये अचानक नहीं होगा। वही मैं कहता हूं कि अगर भारत तंत्र हम लाते हैं विच इज ड्रिवन बाय wisdom and integrity of ancient India and backed up by modern scientific practices, तो ये होगा। लेकिन जब तक इस्लामिक रेडिकलिज्म को हम डिफाइन नहीं करते हैं कि जो जहरीले दांत, जहरीले चंद, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं है, ये तो वहां के लोगों का है। मैं आपको पहले भी कहा था या नहीं कहा था, हलाकू खान का जिक्र किया था कि हलाकू खान इन मुसलमानों को मालूम, वो तो समझते हैं कि चंगेज खान भी मुसलमान थे, बिल्कुल नहीं मुसलमान थे। कुबलाई खान तो बुद्धिस्ट है। हलाकू खान आते हैं वहां मेसोपोटामिया में या मॉडर्न डे इराक में, एक बड़ा आइडियलिस्ट मुस्लिम रूलर रहता है, उसको पकड़ते हैं, लपेट के क्रश करके मार देते हैं, खून ताकि जमीन पे नहीं गिरे। वहां के लोगों की पहले नदी लाल होती है, और उसके बाद नदी किताबें इतनी फेंक देते हैं कि काली हो जाती है। तो कुछ वायलेंट लोग जो रहे हैं, जो इस्लाम में आया, उन्होंने, हम नहीं जानते कि कोई भी रिलीजियस किताब, उसकी सैंक्टिटी पे मैं डाउट करता हूं, रिलीजन पे भी मेरा ऑफ कोर्स अपना ये है। तो इस्लाम से नहीं लेना देना, हमें एक डीप अवेयरनेस चाहिए, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को मर्ज करें, और मर्ज करने के बाद जो है अगर हम लाते हैं तो होगा। नहीं तो टेररिज्म अकेले समस्या नहीं है, टेररिज्म इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट टेररिज्म इज द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर प्रॉब्लम, एंड टेररिज्म कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन आइसोलेशन। इट्स अ फॉर्म ऑफ absolutely इरेगुलर sir वॉरफेयर एंड वी हैव टू ट्रीट इट दैट वे। Absolutely, sir. The points that you raised, they are really eye-opening, and the observations. I mean, Pakistan is going to stay, the deep state is going to stay, and how they are going to keep trying to fracture India, trying to, even widen those fissures. Sir, one more thing that I, in my humble capacity, keep thinking about. Yes, sir. Please, sir. You have a thought. Please go ahead, sir. जो पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तो अपने लिए करता ही नहीं है, हमें इस बात को देना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो किसी और की कॉम्पिटिटर है। पहले इंपीरियलिस्ट पावर ने कहा कि जाते जाते पूरे साउथ एशिया में एक ऐसा कैंसर विष बो के जाओ जो इसको कैंसर की तरह हिंदुस्तान को खत्म कर देगा। मैंने एक इंटरनेशनल मीट पे कहा था कि आपने तो हमारे लिए कैंसर पैदा किया 9/11 के अटैक के ठीक बाद, ये कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए तो एड्स बन गया है।
कुछ नहीं उनके पास किसी के पास जवाब था। तो देखिए ये बोलने से बात नहीं बनती है, इंटेग्रिटी प्रैक्टिस की जाती है, स्टेटक्राफ्ट प्रैक्टिस किया जाता है। ये आके भाषण या प्रवचन नहीं दिया जाता है। और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने के बाद, सफर करने के बाद बोल रहा हूँ, ये महज इत्तेफाक है नवजोत। अब तो ये ओपन डोमेन में है, मेरे ऊपर पेगासस लगाया गया, पेगासस से नहीं लगाया गया, मेरी हत्या करने की पूरी कोशिश की गई, और किसने की मुझे नहीं, मैं ठीक से कहना नहीं चाहता हूं कि वो की गई। तो इत्तेफाक से बच गया हूं, बच जाने के बाद कह रहा हूं। तो देखिए दुनिया को आपको वैसे ही देखना पड़ेगा जो दुनिया है, डिस्पैशनेट होके, रूथलेस होके, सारे इमोशंस को एक जगह साइड में करके देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को देखिए, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पाकिस्तान में कैसे इंसानियत लाएं। वेस्ट तो चाहेगा, चाइना तो चाहेगा कि तमाम गले भी मिले और हमें पाकिस्तान के बराबर ला दें, हमें नीचे कर दे। हमें देखना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से भी अपना हायर मॉरल क्रेडेंशियल इस्तेमाल करें, अमेरिका से भी हम मॉरली हाई हैं, चाइना से भी मॉरली हाई हैं। लेकिन जब तक आप, मैं स्टेट क्राफ्ट पे लिखा था जिसको कंप्यूटर ही हैक कर दिया गया, दोबारा मैंने लिखने की कोशिश की है, और स्टेट क्राफ्ट में मैं कहता हूं वॉर को स्मार्टली जीतना, बिना डिप्लीट हुए, बिना अपनी सस्टेनेबिलिटी खतरे में डाले, वॉर को जीतना स्टेट क्राफ्ट का बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। और कन्वेंशनल वॉर नहीं, इरेगुलर वॉरफेयर को भी स्मार्टली जीतना जरूरी है। तो इस वजह से हमारा पूरा डिस्कोर्स क्लरिकल है। हिंदुस्तान को कहते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, क्लर्क्स एंड डिसऑनेस्ट क्लर्क्स। तो देखिए इस मिथ को तोड़िए, दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। आई कंक्लूड। Right, right, sir. Sir, the point I was trying to make, in addition to what you're saying, it is in sync with what you said, कि जो हमारा पूरा जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, particularly if मैं यूथ की बात करूं सर, आज के जो दौर में, critical reasoning is somewhere that is being compromised to a great extent. So if the youth and the budding generation that is giving critical, throwing it, going it for a toss, then how can we expect the same people when they come to positions of leadership? They will also be buoyed in by those emotions that really, give in to tendencies of maybe pressure or maybe pecuniary benefits. तो आप कैसे अपना ढांचा, जो हमारा ग्राउंड, जो फंडामेंटल बेसिस है, वही मजबूत नहीं है, तो जो ऊपर लीडरशिप में वही लोग जाएंगे, तो कैसे वो मजबूत रहेगा सर? किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहां के ज्ञानवान और चरित्रवान लोग होते हैं। ज्ञान के बगैर चरित्र किसी काम का नहीं है, और चरित्र है और ज्ञान नहीं है तो मूर्ख हैं आप, है कि नहीं? कुछ भी है। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वही होती है। जहां तक यूथ का सवाल है, उनकी कोई गलती नहीं। आप में जो जीन्स आपने इनहेरिट किए हैं, उस जीन्स के उसके बाद जिस समाज में आप रह रहे हैं वैसे ही सोचेंगे। ह्यूमन ब्रेन श्रिंक कर रहा है। किसी समय में ह्यूमो इरेक्टस का लोग कहते हैं कि ब्रेन 600 से 800 ग्राम होता था और 1400 ग्राम तक गया ब्रेन, तो ह्यूमन स्पीशीज डेवलप करने लगी। तो आपकी अगर न्यूट्रिशन नहीं होगी, सैनिटेशन नहीं होगी, तो कॉग्निटिव कैपेसिटी कम होगी। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी डिस्ट्रॉय की जा रही है। कुछ फोर्सेज कहते हैं कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इनको खत्म कर दो, है कि नहीं? वो इसके बारे में कहा जाता है कि वुहान लैब का ये वायरस था जो एक्सपेरिमेंट किया गया, सो कॉल्ड कोविड, और जितने लोग कोविड से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग वैक्सीन से मरे। तो देखिए, अब भारत तंत्र की मैं जब मैं बात करता हूं तो भारत का ही एक, जो हम अपने पीक पे थे, एक समय में हमारी ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी, जो उसका असर कंबोडिया के मंदिर से लेके इंडोनेशिया और जावा, सुमात्रा, बोर्नियो से लेते हुए जापान तक क्या, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े एक मैरीटाइम पावर भी रहे होंगे, एक इंटेलेक्चुअल पावर भी रहे होंगे, एक ऑल्ट्रुइस्टिक पावर भी रहे होंगे। हमारे स्टेट क्राफ्ट की बहुत सारी किताबें नालंदा से तो चली गई, लेकिन चीन में वो सुरक्षित हैं, और हम जो है दरिद्र बना दिए गए। तो जो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, ये बाई डिफॉल्ट नहीं है, ये बाई डिजाइन है कि आपके आपकी मैं कह रहा हूं कि पूरे पॉपुलेशन की क्वालिटी को खत्म कर दिया जाए ताकि आप ये हो जाए। और यही फर्क है भारत में और दूसरे ताकतों में। तो ये जो आप कह रहे हैं, इससे उठिए, उसमें देखिए कि कैसे कोर ग्रुप आता है। उसी वजह से मैं आपके चैनल पे आ जाता हूं। बहुत सारे बकवास टेलीविजन चैनल आते रहते हैं, मैं उनको मना करता हूं, क्योंकि वही क्लरिकल दिमाग है उनके पास, वही बेईमानी और मक्कारी की सोच है, वही छाती पीट के, वो कल बाबर भी रहा होगा तो यही तबका रहा होगा कि जो बाबर के प्रति भी निष्ठा व्यक्त करता रहा होगा, जो सत्ता के खिलाफ या ताकत के खिलाफ उठ नहीं सकता, जिसमें मॉरल करेज नहीं है, मेरी उससे सहानुभूति है। मैं जानता हूं कि उसका डीएनए रिक कर दिया गया है, वो उससे अधिक सोच ही नहीं सकता है। तो आप जो कह रहे हैं, बहुत तकलीफ की बात है। भारत अगर खत्म होगा, या भारत में या इस पूरे साउथ एशिया में अगर ये चीजें खराब होगी, तो एक बहुत बड़ा सभ्यता जो है, जो सबसे बेहतरीनतम और ह्यूमनिस्ट सिविलाइजेशन है, वो बहुत इंजरी सहने के बाद भी धीरे धीरे बच के या उठ के आई, तमाम इम्परफेक्शन के बावजूद। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है।
उन लोगों को दोष मत दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका बिहेवियर डिपेंड करता है आपके न्यूरल सर्किटरी पे, न्यूरल स्ट्रक्चर पे, और जो सोसाइटी में आप इवॉल्व हो रहे हैं उसके ऊपर। पूरी सोसाइटी की साइकी चेंज की जा सकती है, रिक की जा सकती है, और इस केस में तो हमारा पूरा फिजिकल कॉग्निटिव कैपेसिटी रिक कर दी गई है, जो बहुत कम लोग कहने के इसमें है। क्यों? क्योंकि जो पूरा माहौल है, मैं कहता हूं कि मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता है। मैं आपको बताऊं कि मैं अल्ट्रा लेफ्ट पॉलिटिक्स में रहा, पहले रिलीजियस ट्रेनिंग की गई, और इत्तेफाक है कि इतने सब कुछ होने के बाद, इतने लाइफ पे अटेम्प्ट होने के बाद नवजोत में जिंदा हूं और खड़ा हूं। और जब भी मैंने बहुत चाहे किसी ये पे कहा था 5-6 साल पहले कि मृत्यु से मुलाकात होगी तो मुस्कुरा के उससे मिलूंगा, डर के नहीं मिलूंगा। तो जो भारत की ये जो, और मेरा इसमें कोई गुण नहीं है, मेरे कोई इसमें क्वालिटी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे मेंटर्स का मैं कहूंगा, जो भी कहे कि जेनेटिक मेकअप का और मेंटर की जो डीप कंडीशनिंग हुई है उसकी वजह से मैं, मेरा सोचने का ये तरीका है, जीवन में जो अनुभव हुए हैं, कहने से भी नहीं होता है कि जब तक लाइफ में आप आग से जल के नहीं निकलते हैं, जब तक अनुभवों से होके नहीं निकलते हैं, तब तक आपकी सोच नहीं रिफाइन हो सकती। या और क्या कहते हैं कि वो जैसे आग से जलने के बाद आप बैप्टाइज नहीं होते, तब तक सोच नहीं हो सकती है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। हाँ देखिए, और चांस की बात है उसमें, देखिए कि ये नहीं कि आप बनेंगे ही बनेंगे। इसमें देखिए बहुत से लोग खत्म हो गए, मर गए, तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, मूर्ख नहीं होना है। हमारे एक मेंटर कहा करते कि देखिए, आपको जाके मौत के सामने खड़ा नहीं होना है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब मौत से डरना भी नहीं है। तो सही बैलेंस करके उसकी पूरी प्रिकॉशन लेनी है। आग में कूदना है तो थोड़ा फायर का ड्रेस अगर अवेलेबल हो तो फायर का ड्रेस पहन के आग में कूदिए, वैसे जाके मत कूदिए। आई होप कि ये आपका पॉडकास्ट कुछ दिनों तक रहे, मैं रहूं या नहीं रहूं, ये नहीं बातें जो है कुछ लोगों तक जाए। पूरी कोशिश की जाएगी इसको ब्लॉक करने की। इसकी व्यूअरशिप आपने देखा कि जो भी मेरे इंटरव्यू लेते हैं आप, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। कौन ब्लॉक करता है मुझे मालूम है, क्यों ब्लॉक करता है मुझे मालूम है, फिर भी मुझे ऐसे लोगों से सहानुभूति है। यस सर। सर एक बात वो मैं आप कहते हाँ हैं अक्सर बोलिए। कि हम्म। सृजन के लिए आहुति देनी पड़ती है। तो आप आपसे जब अक्सर बात होती है तो आप इस बात का, तो वो ऑब्वियसली जो फायर में जाने के बाद ही जो बंदा पका पका होता है, तो ऑब्वियसली मैं यूथ की, आपने एक सर एक आखिरी जाते वक्त एक आपने बात कही, मैं एक फाइनल कंक्लूडिंग आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। प्लीज प्लीज क्या प्लीज आप बिफोर वाइंड अप, क्या आपने कहा कि यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, यूथ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हमें अपने बुरे कुछ, हाल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, हाँ फॉर हाँ, इज बैड बट कंडीशन लेकिन नो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो उनका साइकोलॉजिकल बायस है या जेनेटिक मेकअप है या जो भी सिचुएशन है, जो, लेकिन सर जो हम देख रहे हैं काफी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, काफी डिस्टर्बिंग चीज है। तो किसी ना किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको स्टेटस क्वो में नहीं रहने देना चाहिए। इस चीज को किसी ना किसी तरह से हमें सर, somebody has to take control of the reins of the time, otherwise we cannot let our civilization go down the drain to the doomsday। तो मेरा सर यही सवाल है, एज अ, दिस इज नॉट इन द एज पर with respect to the interview, but my personal, this is something that I also feel pained when I see the, my, compatriots, my youngsters, my younger brothers and sisters. I want my country to be the greatest ever, and I understand for that utilization of the mind is most important, and that I see is lacking. People are towing the lines of everything that they see around. They're not exercising their prefrontal cortex and all of these things. So आप क्या कहते हैं, क्या इसका एक, who has to take responsibility? If I have to take, I am ready to take. What can we do collectively to pull us out of this rug that society is in, sir? देखिए, जब लोगों से डील करने की बात होती है तो आप कंट्रोल नहीं ले सकते, आप सजेस्ट कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, अपने लाइफ के एग्जाम्पल से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत सारी, ये जो मैं कहता हूँ कि हमारी सोच एक पायरेटिक सिविलाइजेशन की सोच है, जो कहती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दूसरा जो, एवरीवन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन इंटरेस्ट। मैं इससे बहुत ही डिफर करता हूँ। हमारी सिविलाइजेशन यही कहती है कि ना, अप्रोप्रिएट थिंक कीजिए आप हर एक रोल में। और जो भगवान राम की मैं कहता हूँ, देखिए हिंदुस्तान में बर्बादी तब से शुरू हुई जब कर्मकांडी ब्राह्मणों ने भगवान को मंदिर में कैद कर लिया और उसके बदले में वो रिश्वत कमाने लगे कि जन्म देने से लेकर मृत्यु में जाइए, बहुत ही खराब है। तो मैं, जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म के ठेकेदार है, मैं उनसे कहता हूँ इसको बदलिए कि मृत्यु में भी आप जाते हैं। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये उनका है, इसका एक गलत हमारे डेकेडेंट वर्जन का फ्यूजन जो वेस्ट के से हुआ, वो चिंता की बात है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कौन लेगा, आप नज कीजिए, रेकमेंड कीजिए, देखिए सोसाइटी में फर्क आएगा। ऐसी बात नहीं कि फर्क नहीं आएगा। और हिंदुस्तान के बड़े सेठों को भी कहता हूं
एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। एक सेठ थे जिनको जगत सेठ कहा जाता था। सिस्टम बड़ा डिजेनरेट कर चुका था, परवर्ट हो चुका था जब तक मुगल आए। मैं मुगलों को दोष नहीं देता हूँ, हमारा स्टेट क्राफ्ट इम्पोवरिश हुआ तभी तो मुगल आए, हम जा नहीं पाए या जो भी रहे। बहुत सालों तक 700 से 1200 साल तक रेजिस्ट करते रहे, फिर तराइन का युद्ध होता है, उसके बाद बहुत 1757 की मैं बात कर रहा हूँ। तो तब तक हिंदुस्तान बहुत ही, मैंने कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है, कहते हैं कि इतना डिजेनरेट डेकेडेंट परवर्ट होने के बावजूद भी हिंदुस्तान मजबूत था। तो सेठ फतेह चंद हुआ करते थे। तो सेठ फतेह चंद को जिस किसी वजह से सिराजुद्दौला आते हैं और वो इंसल्ट करते हैं फतेह चंद को, फिर भी फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि मिली हुई थी। अब गलती एक जगह से होती है, कैसे होता है, इनकी भी गलती थी, ये भी अपना प्रॉफिटियरिंग का एक गलत नेक्सस बना के अलीवर्दी खान के साथ रह रहे थे। इनके परिवार के लोग सबसे अमीर लोगों में से थे, इनको जगत सेठ कहा जाता था। जब सिराजुद्दौला के साथ इनका झगड़ा होता है तो ये इनका रोल मीर जाफर की तरह नहीं आता है, इनका भी रोल मीर जाफर के साथ था, जो मीर जाफर के साथ मिलकर कंपनी के साथ आए। कंपनी में कितने सैनिक थे? 3000। उसमें कितने अंग्रेज थे? 700 या 800 या 600, पता नहीं है, 600 से 800 मैक्सिमम। 2200 कंपनी के फौज में भी 2200 से 2400 हिंदुस्तानी थे। फिर मेरे सिराजुद्दौला की फौज में कितने लोग थे? 50,000। फिर भी ये फ्रॉड ये करके, अब उसके डिटेल में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, परफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन चलेगा, वो हरा देते हैं। तो ये जीत जो है मुजाफर की नहीं, फतेह शाह की भी थी, जगत सेठ की। उसके बाद फतेह शाह का क्या होता है? सोचते हैं कि जिस कंपनी को लाते हैं उनका बुरा अंत हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं वो भी, ये सब चीजें होती है। जगत सेठ से कुछ नहीं रहते हैं उनके वंशज। तो मैं आज के उससे तथा कथित सेठ हैं जो बड़े हैं, आप समझते हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि देखिए, आप जो है अमेरिका वगैरह का मॉडल मत कीजिए, इसमें भी दिलचस्पी लीजिए। और ये आपके हक में है कि हिंदुस्तान के सिस्टम को लूट के जो आप बन रहे हैं, चलिए 1-2 साल पुष्ट, 2-4 पुष्ट आप तक जाएंगे, उसके बाद आपका भी बहुत बुरा अंत होना निश्चित है अगर भारत कमजोर होता है तो आप सेठ हैं उनके लिए भी, जो बड़े अफसर हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि आपको छोटी पिक्चर दिखाई पड़ रही है ना, और जो वाकई स्टेट क्राफ्ट के प्रैक्टिशनर है वो बहुत दूर तक देख सकते हैं। हम लोग तो दुनिया में आए हैं 40-50-60-70 साल तक के लिए आए हैं, जो कल हमारा था वो भी आज नहीं है। उस जगह पे जाते तो सब कुछ बदल चुका है और यहाँ पे हम लोग होंगे नहीं। लेकिन वाकई जब सभ्यता की बात करते हैं, अपने सो कॉल्ड वंशजों की भी बात करते हैं, तब भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, इस बात को, मर्म को समझे कि स्टेट क्राफ्ट क्या है। और ये अपने ये चोरी करके, चकारी करके, सिस्टम को रिक करके आप जो है थोड़ा जो पैसा बना ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 200 साल तक तो हम कुछ नहीं करेंगे तब भी ऐसे जीवन जीते रहेंगे। 200 साल इत्तेफाक से शायद बच भी जाए, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है कि नहीं बचे। इसलिए जरूरी है कि भारत तंत्र को मजबूत कीजिए, अपने लिए ही सही। और राजा भरत की जो मैं कहानी कहता हूं कि राजा भरत ने भुवायु को अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो भारत तंत्र की बुनियाद पे है। तो उनसे लोगों ने पूछा, उनके अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को ओवरलुक करते हुए, तो लोगों ने पूछा कि क्यों आपने दिया? तो उन्होंने कहा कि अगर भुवायु मैंने किसी जनता के काबिल व्यक्ति में से को नेतृत्व नहीं जाता है और मेरे नाका जो भी है अयोग्य पुत्र को मैं ये देता हूं, तो न तो मेरा योग्य पुत्र अपनी रक्षा कर पाएगा, न साम्राज्य की रक्षा कर पाएगा, न लोगों की रक्षा कर पाएगा। तो हमारे यहाँ जो भारत तंत्र की मैं बात करता हूं, वो गवर्नेंस एक प्रिविलेज नहीं था, गवर्नेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो देखिए 200 साल, 400 साल, 500 साल भी हमारी एक सिविलाइजेशनल जर्नी जो लाखों वर्षों की होगी, उसमें ये मैटर नहीं करता है। या 1000 साल भी काफी मैटर करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करता है। तो हर एक इंडिविजुअल का हमारे यहाँ क्यों पुरखों के ऊपर ध्यान दिया जाता है? वो सब बेकार की चीजें सबवर्ट हो गई है कि आप इस दुनिया में आए हैं, कुछ दिनों तक आपको रहना है, उस दौरान आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए और करने के बाद जाइए। तो एक पॉइंट के बाद अपने आप को जरूर बचाइए, ये नहीं कि मर जाइए, जरूर बचाइए, जरूर सशक्त होइए, लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ, यूनिवर्स के इंटरेस्ट के साथ कैसे सैनिटाइज करते हैं, वो हमारे विजडम की पराकाष्ठा रही है, वो हमारे विजडम की स्ट्रेंथ रही है। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रेन ही रिक कर दिया गया है, जो आप कहते हैं यंग जनरेशन का नहीं, हमारे एलीट का भी। और एवरेज एलीट का ब्रेन जो है किसका है? ट्रेडर, ब्रोकर, अंडरहैंड डीलर, क्लर्क एंड डिसऑनेस्ट क्लर्क। तो कहां से उनको हम स्टेट क्राफ्ट पे करेंगे? कि ऊंची जगहों पे भी बहुत छोटे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन चलिए, आप जो कहते हैं कि एक नवजोत से तो मेरी मुलाकात हुई और मैं भी अपने पागलपने में सरवाइव कर रहा हूं इस दुनिया में। सर ये जो होता है ठीक है, सर नहीं होता है कोई बात नहीं, हम अपना तो सर काम कर रहे हैं। इट्स अ थैंक यू। ब्लेसिंग टू हैव मेंटर्स लाइक यू। और मुझे मुझे उम्मीद है सर, आपकी जो बातें हैं, आप ये जो श्रोता है बड़ी संवेदनशीलता से इसको समझेंगे, सुनेंगे और
अगर पॉलिसी मेकर्स भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का संज्ञान लेंगे वो और नहीं नहीं, भारत वो के उज्जवल सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर के पीछे जो लोग हैं इसको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उनको हमसे डर लगता है। तभी तो उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके हमारे ऊपर पेगासस लगाया। लेकिन मैं उनसे सर सहानुभूति रखता हूं कि उनका मेंटल मेकअप जो है, उनकी जो लाइफ की एवोल्यूशनरी जर्नी है, तो उसमें वो वही रहेंगे। और मैं कहता हूं, मैं रहूं नहीं रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लाइफ के बाद भी लोग सुने तो एक पब्लिक डोमेन में आपने ये एक आर्काइव बना दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू नवजोत, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। nothing can stop an idea whose time has come, and the idea for these thoughts is definitely here, sir. So it's always a pleasure listening to you. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. थैंक Jai. यू। जय जय, थैंक यू।